क्या ऑर्डर होता है इनका? क्या मल्टीपल थिंग्स ब्लॉक व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक एंड टेक्निकल को कॉल, तो कंस्ट्रक्टर कॉल है क्या किसी कंस्ट्रक्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट ये आपको. Then we talked about the nest. What are the different? What is nested class defined as? Have different types. What are the different static nest, non-static, और भी क्लास भी है. अभी हम बस उसको anonymous. We have static local inner. अगर आप एक कोई क्लास लिख क्लास के अंदर से बोला विदाउट स्टैटिक कीवर्ड कोई क्लास क्रिएट का लोकल इनर, अगर आप कोई ब्लॉक के अंदर क्लास को बोला लोकल इनर, अभी तीनों में आप क्या क्या कर. द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज लोकल इनर क्लास के बाद फॉलो क्वेश्चन स्टैटिक नेस्टेड क्लास में आप क्या, नॉन स्टैटिक क्लास या इनर क्लास में आप स्टैटिक बोथ एज पर देन लोकल इनर क्लास एंड नॉन स्टैटिक, सिंपल. ये दूसरा स्टैटिक और क्लास स्टैटिक क्लास के अंदर जो स्टैटिक में क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरी उसके अंदर जो नॉन स्टैटिक और बार घूमता है विद द हेल्प ऑफ रेफ. तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, ना कि आउटर क्लास. आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट और उस रेफरेंस के बाद इनर क्लास के अंदर आपके पास अभी इनर क्लास नॉन स्टैटिक, अगर नॉन स्टैटिक आपको क्या ऑब्जेक्ट, तो आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना. वंस यू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट रेफरेंस. तीसरा बहुत सिंपल मेथड के अंदर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और यू गेट द रेफरेंस. व्हाट इज इट, व्हाट कंटेंट, हाउ आर वी गोइंग वर्स ऑफ दैट. बहुत सिंपल. अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन अभी आपको कोई पूछे क्या होता है, तो आपको स्टैटिक नेसेसिटी क्या है, उसके बाद उसके अंदर हम क्या कंटेंट के मेंबर. बहुत सिंपल. ओके नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 or 2 आर इनटू क्लास कम पहले से पहले कभी नहीं. क्लास ऑब्जेक्ट हमने देखा था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट. देन वी टॉक्ड अबाउट क्लास component. Class components, as we have covered lot of things there, we have talked about variables, sets, structures, blocks and nested. एक क्लास के अंदर आप ये सारा लिख सकते
अभी वेरिएबल्स में भी हमने देखा था कि लोकल वेरिएबल के बाद और स्टैटिक वेरिएबल methods we have in methods, static methods or constructors called parameter or parameter. As I discussed last time कि आपको इन पर्टिकुलर बहुत ध्यान कि आप लोगों ने बहुत इस ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक्स और नेस्टेड क्लास में हम स्टैटिक क्लास स्टैटिक और इनर क्लास बाद लोकल इनर क्लास हाँ ये भी प्रोसेसिंग कौन सा वाला ये ब्लॉक एंड वाला क्या ओके तो हम क्लास कंपोनेंट अभी पांचों कंपोनेंट्स आप हाई हाई लेवल में आप वेरिएबल आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट वांट टू स्टोर सम फॉर दैट पर्पस मेथड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं टास्क कंस्ट्रक्टर्स आर यूज द ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक्स आर यूज्ड of code either at or at the class load and nested classes so that if you want to use class inside the class अभी हम nested classes बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उस क्लास को आप लेट्स से लॉजिकली you know that that class is only belong class will not आपका सबसे ज़्यादा यूज मतलब कैन यूज एनी वन ऑफ so if you think that this class is at this particular class only the अभी इसके बाद आपको एक टॉपिक है एक्सेस व्हाट अभी एक्सेस स्पेसिफायर बहुत सिंपल है एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है कि आपने जो अभी ये कंपोनेंट व्हाट एवर द इन कंपोनेंट आप एक्सेस एक्सेस आप मुझे बता एक्सेस करना मतलब कि आपका वेरिएबल आपने कहीं स्टोर कर दिया स्टोर द नाउ हु कैन एक्सेस फ्रॉम वेयर दिस डेटा कैन बी आपने कहीं तो आपने पर्टिकुलर now the data is stored now do you want this data to be accessed by everyone do you want this code this particular data to be accessed by particular person or maybe part of the so if you want to restrict you can access your variable you can call you can use your algorithm or who can use your use your nest or who can access it. So if you want to restrict that to restrict that we called as access access specify करना who can आपको एक what is the first thing have access or not will allow you your zone they will ask you आप कोई भी लेट से एयरपोर्ट जा they will ask your ticket क्या allow तो वैसे ही आपके पास you want to
अभी लेट से आपको प्राइम मिनिस्टर कैन यू डायरेक्टली मीट, यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ, you have to go through a lot of restrictions. So similarly, you have some data, some method for which you want to control or restrict and reach for that purpose. What we use now in Java, we have very simple hierarchy. सबसे बड़ा आपका this is your entire word of your app. Java application will have this entire your application. Now your application code, आपके application का क्या है, आपका एप्लीकेशन मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स, क्या होता है आपके पास, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन इज सेट ऑफ प्रोग्राम। अभी आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा है, जो कोड लिखा है, दैट कोड इज डिवाइडेड, दिस इज इंटायर एप्लीकेशन के अंदर आपको मिले सारे पैकेजेस, क्या मिलेंगे आपको, पैकेजेस और डिफरेंट, दिस इज द सेकेंड। We have different packages now, different packages. Now this is one package. Package is kind of a folder. This is one big folder. The application entire one big folder, and inside that we have packages. ये आपका कोई application आप develop कर रहे हो. If I go to this particular folder, this entire your project, your entire project. Inside that project you will find what do we have now, different your project folder के अंदर आपको क्या है, folders है, SRC मतलब out तो SRC if you see here, SRC stands for source code, और आपका जो सोर्स कोड है आपने क्या किया, अरे पैकेज फोल्डर्स के अंदर आपने खोज, अगेन फोल्डर्स के अंदर फोल्डर हो सकते, फोल्डर्स के अंदर here is your code. See, this is one bigger folder, that is project folder. Inside that we have package in another folder. Inside that folder we can another folder or directly the class. We have three levels: a project folder, then inside that we might have another package or a folder. Inside that we will have a class. Now this is your folder 1, your package 1 package. So your code is written in different folders. We have different folders for different और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपके पास मल्टी, बस ये these are nothing but for class 1, class के अंदर. Again, what is the biggest boundary we have? Application. Then we have another sub part into that. We have a kind of a folder. Inside that we have a class. अभी आपके पास 3 levels है. You have 3 levels. You have 3 some kind of. Now this particular class is part of this particular package. Particular package, particular part of this particular. How biggest you can think of as a big room. Inside that we have multiple rooms. Inside that room we have multiple classes. Now again inside this is a class. Inside this class we can have multiple. Now what I want this particular class. Now I want this class to be accessible throughout the application. Throughout the application. का मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है. क्लास को करना मतलब व्हाई डू वी यूज क्लास,
तब अभी आप देखो उसके अंदर स्ट्रक्चर होगा कुछ, और उस पर्टिकुलर क्लास का यूज करके आप यूज इस पर्टिकुलर क्लास को, इफ यू वांट थ्रू आउट योर एप्लीकेशन इज द बाउंड्री, एनीवन कैन एक्सेस दिस। आप चाहते हो क्या बनाते हो आपको पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर क्लास कैन एक्सेस एनीवेयर। नाउ इफ आई मेक दिस क्लास एज डिफॉल्ट, अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो वो बन जाता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब दिस पर्टिकुलर क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फ्लो में, दैट पर्टिकुलर क्लास कैन नॉट बी एक्सेस द। तीसरा, अगर आप उस पर्टिकुलर क्लास को अभी प्राइवेट तो नहीं कर सकते, आउटर क्लास कैन बी, आउटर क्लास को आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं में, आउटर क्लास को आप प्राइवेट और प्रोटेक्ट आउटर क्लास। लेट्स टॉक अबाउट, now this is the class hello world. Now this class is public, class is public. Now if I do not write the class is default, default मतलब class can be is visible in the package itself, like visible within the package. अगर आप इस क्लास को प्राइवेट बनाने फाइल टाइम है, अगर आप इस क्लास को प्रोटेक्टेड करते हैं फाइल टाइम, तो आउटर क्लास पर ऑलवेज it will be always public, always public default. So we have 4 different levels of access, 4 different levels. अभी let's say I will tell you the simple, अभी let's say आप कोई company will be as an employee. Now what access you will have, what permission you will see, you will be able to see your only salary. Can we say everyone will not be able to see? Let's say आपका banking application, you are able to see your only own balance, आप खुद का ही बैलेंस देख सकते, बाकी सबका देख सकते, that is a restriction, that is the access, you can only access your own. Similarly, I am applying restrictions on our class. So access specifiers are the restrictions or आप बोल सकते हो boundaries. What are access specifiers? But risk or scope or vision, nothing but restriction that we apply to class and component. Class and its component. बहुत simple है. What are the different access specifiers are there in Java? There are 4 access specifiers: public, private, and okay, public, default, private, and let's try to understand this now. अगर public होता है, अगर कोई भी class public होता है तो that class can be anywhere. Class can be anywhere. Now let's say I have 2 packages. One. Now this class, I have a class, and I have main public static, और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ ये क्लास. Will you be able to create object of this particular class? Access. So will you be able to do that? क्यों? क्योंकि ए क्लास कहाँ तक विजिबल है? पैकेज 1. आप ए क्लास को पैकेज 1 के बाद रिस्ट्रिक्शन, तो आपको यहाँ कंपाइल टाइम गेट द कंपाइल. अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास बना देता हूँ पब्लिक, दिस पर्टिकुलर क्लास इज so you do now this class is, now I have some variable int a, b,
Will I be able to access these all of the variables? Or if I try to print all of this of a dot a to p of dot b to p of dot c dot, will you be able to do that? Sure. भी आप यहाँ पर देखो है आपने पहले ही लिखा, मतलब ये सारे वेरिएबल्स और डिफॉल्ट मतलब इनको इन द पैकेज, द सेम पैकेज। तो यहाँ पर भी आपको आएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इस पर्टिकुलर, अभी एक और डिस्क्लेमर, अगर आपका क्लास पब्लिक है डजेंट मीन दैट कि उसके अंदर आप एक्सेस करो में, अगर कोई क्लास पब्लिक है इट डजेंट मीन कि उसके अंदर सब कुछ आप एक्सेस, राइट। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को बना देता हूँ पब्लिक कैन एक्सेस, इफ आई मेक दिस एज वेरिएबल प्राइवेट तो आप उसको कर सकते। अगर मैं इसे डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, और मैं इसे बना देता हूँ प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट, अभी के लिए समझो पैकेज, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट दोनों तो प्रोटेक्ट पैकेज लेवल, तो आप ये दोनों एक्सेस कर सकते हो। चारों में से आप बस एक वेरिएबल एक्सेस, डिफ़ॉल्ट नहीं एक्सेस कर सकते, क्यों? वो वेरिएबल है डिफ़ॉल्ट। देन सी एंड बी इज प्राइवेट, बी इज प्राइवेट मतलब उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते, विद इन द क्लास ओनली, द क्लास ओनली। Then default you cannot access that outside of the package. Protected also, for now understand it is not accessible outside of the same package. So inheritance time I will explain क्या है, same package as well as the subclass, same package as well as the subclass. We'll talk about that subclass thing later on. ये पहला यूज केस थिंग, आपके पास फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपके पास 3 लेवल्स है। दिस इज योर एंटायर एप्लीकेशन। अगर पब्लिक होता है, अगर पब्लिक होता है तो आप उसे कहीं से भी, और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा, यू विल get multiple packages, then we'll have multiple classes, you have multiple class 1 class, आपके पास 3 लेवल, एप्लीकेशन लेवल, पैकेज लेवल, एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन मतलब आपका पब्लिक, मतलब पैकेज मतलब डिफॉल्ट, क्लास लेवल। अभी हमारे ऊपर, नाउ लेट्स से वी आर आल्सो at now in real world also, can you travel to any country in the world, need some permission, there is this restricted, right? That is restricted, right? So within the India, do you need any passport? You are allowed to visit entire India, but entire India it is open for everyone, right? But not all places. This is your India, अभी ये इंडिया पूरा एप्लीकेशन आप कहीं पे भी जा सकते हो, पब्लिक मतलब, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इंडिया में सब कुछ पब्लिक है, आप कोई प्राइवेट प्लेसेस भी, और इस पर्टिकुलर लेट से दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ कोई आईबीएम का बिल्डिंग, आप ये बिल्डिंग है आईबीएम का, कैन यू डायरेक्टली गो इनसाइड दिस, या लेट से आरबीआई का बिल्डिंग है, डायरेक्टली गो इनसाइड, तो बोले तो इंडिया में कहीं भी जा सकते, इट डजेंट मीन दैट मतलब आपका पूरा क्लास पब्लिक है तो उसके अंदर सब कुछ आप, इट डजेंट मीन दैट योर क्लास इज पब्लिक मतलब
everything that is doesn't mean that. So class is public means that that entire class is content is not public. The class is public. The class is public. सर का कंटेंट के अंदर जो आप लिखो, आपको मैं अभी तीन से आपको फिर से एक बार बताता हूँ. नाउ आई हैव टू क्लासेस. आई हैव टू क्लासेस. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दो क्लासेस सेम क्लास सेम पैकेज में हो सकते हैं या अलग अलग? क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे पास दो क्लासेस C1 और C2. पहला ऑप्शन क्या है? दोनों सेम पैकेज में हो सकते हैं. दूसरा क्या हो सकता है? C1 एक पैकेज में, C2 दूसरे पैकेज में. अब लेट से मुझे C1 का कंटेंट C2 में एक्सेस क्या करना है? C1 का कंटेंट C2 में एक्सेस करना है. राइट? अभी C1 और C2 दोनों अलग अलग पैकेज में है, तो C1 कैसा क्लास? पब्लिक. इट शुड बी. और यहाँ पर प्राइवेट क्लास. क्लास को प्राइवेट नहीं बना सकते. बस दो ही ऑप्शन है. और जो आउटर क्लास है उसको आप पब्लिक या डिफॉल्ट ही बना सकते. अभी C1 का क्या एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए? इफ C आप आउटर क्लास तो दो ही ऑप्शन है. आउटर क्लास को दो ही ऑप्शन, पब्लिक या डिफॉल्ट चल जाएगा. लेकिन यहाँ पर कंपलसरी. ये सिंपल है. अभी दूसरा ध्यान देना. अब मेरा एक वेरिएबल है, मेरा एक क्लास है, के अंदर एक वेरिएबल है और एज लेट्स एक्स वाई द वेरिएबल. नाउ दिस इज द क्लास. के अंदर ये वेरिएबल है. ये क्लास एक पैकेज के. और मेरा दूसरा एक पैकेज है. यहाँ पर दूसरा टेस्ट पर है उसका. अब मुझे इस पर्टिकुलर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, भाई वी कैन नॉट, क्योंकि क्लास ए क्या है? डिफॉल्ट. तो आपको कंपाइल टाइम एरर. आप ऐसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे वर्ड दिस कंपाइल टाइम एरर, तो मैं क्या अभी आप एक्सेस कर. आई हैव अनदर लाइन SOP ऑफ a डॉट x डॉट xy. कैन आई डू दैट? because this xyz is called x is called. आपने कुछ नहीं, मतलब ये now this is the first thing. दूसरा, और ये दोनों क्लासेस एक ही पैकेज में है. नाउ टेल मी, दोनों क्लासेस एक ही पैकेज में, whether it will work now? It will work now. Why? Both the classes क्या आपको एक्स्ट्रा. now this particular field is private. एक्सेस प्राइवेट, मतलब प्राइवेट का मतलब क्लास ही है. तो क्लास ही है.
गेट गेट फाइल टाइम। अब मुझे एक्स वाई जेड एक्सेस करना है, तो मुझे एक्स वाई जेड एक्सेस, मुझे क्या पब्लिक करना पड़ेगा? मैं उसको क्लास को कुछ टच नहीं करना। दिस इज प्राइवेट, दिस इज प्राइवेट, राइट दिस ये प्राइवेट है। अभी क्लास ए को मैं कुछ टच नहीं करना। हाउ द क्लास, so I want this XYZ to be accessed in class 10. एक ऑप्शन के आपके पास सिंपल इस क्लास को में, अगर आप XYZ एक्सेस करते हैं, XYZ कहाँ पर एक्सेस, आप इस क्लास को काम बन जाए। दूसरा और एक कर सकते हो, आप ये XYZ इस क्लास के अंदर में क्लास के अंदर और वो मैं, चलो देखते हैं उसे। नाउ सबसे पहले आउटर क्लास आपका बेसिक्स, डू यू नीड दिस डायग्राम्स और कैन रब दिस? फर्स्ट थिंग, आउटर क्लास cannot be private or protected. Class cannot. What are access specifiers? First of all, what are access specifiers? Java. These are the public default keyword है, लेकिन डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं, डिफॉल्ट कीवर्ड है जावा में, we do not need to write default. Using this, what we can do, use access specifiers. Can specify the access class and a access level, can access. Now let's try to understand पब्लिक। पहले सबसे समझते हैं पब्लिक। पब्लिक पब्लिक क्या कर सकते, कैन अप्लाई द एक्सेस द outer class, it's apply the access to the outer class. If the member is public, what it means? If the member or class public, then it can be accessed. Member or class is short application मतलब any package, any class the given
कोई भी पैकेज डिफ़ॉल्ट, पहले तो ये डिफ़ॉल्ट कैपिटल, so we do not need to, if the access specifier is default, then the class or its members can be accessed protected अगर प्रोटेक्टेड है तो बताइए एक्सेस class or member can be accessed within the package or in the subclass. This lastly we have, so if the outer class cannot be, ये याद रखना है, यहाँ पर भी आपको याद रखना है outer class basic याद, then if the member is, if the class component is private, then it cannot be accessed. तो बहुत बेसिक सा रूल है, आपको ऐसे 3 बॉक्स कंसिडर करना है। सबसे क्लास, the scope is very restricted, then the package little more relaxed, package that is default or protected, then we have the public, how the entire application. Let's try to understand that. We are learning first thing, that is access specifier package. No, यहाँ पर एक पैकेज here. Now I have P1 package and there I have this class, class there. Now if you see this, class is public, class is public. Now I create another package, yes, and inside the P2 class I have another P2 package, I have class B, and there I have, now we have 2 classes, package 1, package 2, package 1 में A class. Now if I try to create object of A class, where is A class? A class I am importing from package. Now this is accessible, now accessible. Why? Because the class is public. The moment I remove public, what it says, this particular thing is not public and cannot be accessed from out package. ये बोल रहा है एक तो आप उसे पब्लिक कर दो, उसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्लास ए आपका cannot be accessed outside of the package. क्या बोल रहा है ये रीजन, class A is in one package, class A is in package 1 and class B. तो आप क्या कर रहे हो, क्लास A को क्लास B में क्लास से, how you are able to, now I am just creating some tables. Now I made this as public. Now carefully, if you do not write anything called public, private, protected,
is called if you do not write any. Now try to access the members of the T. R what? Because तो यहाँ पर क्यों एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? ओनली पी इज पब्लिक। क्यों आप इस क्यू को आप इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं, तो आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं। आर आर इज ऑल्सो सेम पैकेज, पैकेज सेम होगा तो डिफॉल्ट। तो आप ये तीनों एक्सेस आप एक्सेस। दूसरा ऑप्शन क्या है? नाउ आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दिस बी क्लास आई एम ऑल्सो writing in. Now there is another B class package. Now just go that. Now A class and B class, A class and B class both are in the package. दोनों भी एक ही पैकेज में है। तो आप पहला तो B भी एक्सेस कर सकते हो इस पब्लिक, R भी एक्सेस कर सकते हो, S भी एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज वी आर इन द सेम पैकेज। बचा ये वाला का क्या हुआ? प्राइवेट। इस प्राइवेट मतलब क्लास के बाहर आपके पास एक और है। आप इस क्लास को क्या कर सकते हो? वॉइड मेन स्टैटिक नहीं, सारे सब कुछ विद इन द क्लास यू कैन एवरीथिंग, कोई भी स्पेसिफायर होने दो एक्सेस। दूसरा, इफ विद इन द सेम पैकेज बट प्राइवेट है तो आप उसको एक्सेस, यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर होने दो सेम क्लास में, डजेंट मैटर, यू एक्सेस। नाउ देयर आर टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी, सेम आर इन द पैकेज, बोथ ऑफ देम आर इन द। तो आप प्राइवेट छोड़ के बाकी सब कुछ पब्लिक डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं। नाउ थर्ड केस, क्या थर्ड केस है? Now we are in two different packages. We have two different packages and package 1 में A class, package 2 में B class is trying to access the members of, जैसे आप कौन से मेंबर? ओनली पब्लिक से भी पब्लिक, सिंपल याद रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, बिफोर दैट आई विल राइट द कंक्लूजन। हियर एक्सेसिबिलिटी, अगर ये पब्लिक है पब्लिक है तो विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर सकते हो क्या आप? एक्सेस दैट क्लास विद इन द सेम पैकेज, विद इन द एप्लीकेशन सब क्लास, yes everywhere, yes private
within the same class, yes. बाकी सब protected within the same class, yes. Same package, yes. Within the application, no, as well as, तो आपको 3 ही लिखना है. You not need to worry about that. Within the application, within the same class, yes. Package, yes. Within the subclass, the subclass. और एक और आपको ऐड करना, डिफरेंट पैकेज की बात. सेम क्लास, सेम पैकेज, सब क्लास. तो पब्लिक का कोई टेंशन नहीं, एवरीवेयर, यस. प्राइवेट आल्सो सेम क्लास, यस. बाकी सब नो. प्रोटेक्टेड, सेम क्लास, सेम पैकेज, सब क्लास. आंसर इज डिफरेंट पैकेज, यस. आंसर, अगर वो डिफरेंट पैकेज में जो सब क्लास है, कोई रिलेशन, विल टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड, दोनों को कोई रिलेशन पेरेंट चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते, और दोनों को कोई रिलेशनशिप और आप एक्सेस. डिफॉल्ट सेम क्लास में, यस. सेम पैकेज, यस. सब क्लास अगर आपका सेम पैकेज में है तो आंसर है यस, और सब क्लास पैकेज में है तो डिफरेंट पैकेज में आपका सिंपल. आपको ये दो ही याद रखना है, सेम क्लास, सेम पैकेज एंड सब. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. नाउ आई एम creating a class called as that I have created in that inside. Now I have some fields and I'm making all the fields private in course name, private in. I have these many fields, course ID, tell me. I have main method and I create. How do I access all of these? I need to create object of this. How do I access all of these members? पहले तो कोर्स क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो क्या? We are in the same class. अब मुझे इसके सारे मेंबर्स एक्सेस, डॉट कोर्स आईडी, कोर्स डॉट कोर्स नेम डॉट की वैल्यूज में दे रहा हूँ. Now can you see this one thing? We have created the course to access the members. अभी आप कोर्स आईडी कोर्स ये सब कुछ कहाँ पे एक्सेस कर रहे हो? The we are able to access the we are able to access in the
इक्वल टू ऑल ऑफ द, दिस इज पार्ट ऑफ दिस बात हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट एक्सेस कर, सेम क्लास की बात हो तो राइटिंग आना, आई राइट द here the error now. What do we get? We get, why do we get this compile time error? Well, आपको पहला थंब रूल, अगर ये मेंबर्स उसके प्राइवेट है, मेंबर्स आर प्राइवेट, देन क्लास, आप इसको क्लास के बाहर नॉट एक्सेस दिस, तो फिर इसको कैसे एक्सेस करो, एक्सेस करना है लेकिन डायरेक्टली तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो ब्लॉक हो गया, ये तो ब्लॉक हो गया, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास कैन एक्सेस ईच अदर डायरेक्टली, व्हाट एवर द एक्सेस स्पेसिफायर, अगेन members of the same class can access directly, can we access directly, यहाँ पर किया है ना, मेन मेथड यहाँ पर लिखा था आपने, ये पब्लिक मेथड लिखा है आपने मेन मेथड, और उसके अंदर आपने मेंबर्स एक्सेस की, वी आर एक्सेसिंग, वेयर वी आर एक्सेसिंग द सेम क्लास। अभी यहाँ पर मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, पब्लिक इंट गेट कोर्स, और रिटर्न क्या करती है, कोर्स आईडी, क्या किया मैंने, पब्लिक मेथड लिखा है और वो रिटर्न क्या करती है, इंट, और रिटर्न क्या कर दिया मैंने, कोर्स आईडी। कैन आई एक्सेस द कोर्स आईडी इन दिस मेथड directly, can I access course ID directly? Yes, we are in the now. Now the reference course dot get, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे उससे, लेकिन एक्सेस दिस पब्लिक मेथड, और पब्लिक मेथड के थ्रू आप इसको, लेट मी राइट वन मोर मेथड, पब्लिक थिंग गेट कोर्स नेम, और ये भी रिटर्न क्या करता है, रिटर्न, सिमिलरली आई विल राइट पब्लिक इंट गेट प्राइस, सिमिलरली पब्लिक स्ट्रिंग कोर्स इंट, यहाँ पर आपने लिखा, मतलब आप प्राइवेट डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं, बट थ्रू पब्लिक में, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, अभी भी यहाँ पर देखो फिर कंपाइल, बट आप डायरेक्टली पब्लिक, ये प्राइवेट एक्सेस, बट कैन यू एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स, कोर्स डॉट गेट कोर्स नेम, गेट कोर्स प्राइस, गेट कोर्स, और गेट, वी आर एबल टू एक्सेस पब्लिक में, वी आर एबल टू एक्सेस थ्रू पब्लिक में। अभी जो चार मेथड को बोला, पब्लिक सेटर मेथड बोला जाता है, पब्लिक सेटर मेथड, कॉल दिस एज पब्लिक सेटर मेथड, बट दिस मेथड्स आर कॉल्ड एज पब्लिक सेटर मेथड। अब मुझे क्या करना है, किसी का वैल्यू चेंज, क्या चाहता हूँ कि मेरा कोई कोर्स है, उसका नाम चेंज करना है मुझे, कोर्स नेम टू जावा फुल स्टैक करना है, तो आप डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं, बिकॉज दैट इज प्राइवेट, तो आप एक पब्लिक मेथड, तो पब्लिक मेथड, आई एम राइटिंग अ पब्लिक मेथड, पब्लिक वॉइड सेट आईडी, और ये एक्सेप्ट कोर्स राइट करना मुझे, दिस डॉट, similarly I will write a method public void name,
यहाँ पर दिस डॉट कोर्स इक्वल टू वी आर असाइनिंग लोकल वेरिएबल वैल्यू टू, I will write public void set price set dot price id। फिर एक और मेथड लिखो पब्लिक void set print string print right this dot code। ये अभी जो मेथड क्या बोला जाता है, पब्लिक सेटर्स। अभी मुझे वैल्यू मैंने गेट करी, मुझे इनको सेट करना है, मुझे इसकी सेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कोर्स डॉट सेट कोर्स आईडी। अभी यहाँ पर मैं वैल्यू सेट कोर्स डॉट सेट कोर्स नेम आई एम एस जावा सेट कर दी मैंने, और प्राइस डॉट सेट प्रिंट। मैंने वैल्यूज अपडेट करी, सेट करी, मॉडिफाई। पहले क्या थी वैल्यूज, ये वैल्यूज थी 1 जावा 100, चेंज करके ये किया, और फिर इसकी गेट करी क्या, so I have set the values using public setter method। now retrieve or read the value public write that one। पहला एक थंब रूल आपको याद रखना, यू कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स, बस ये याद रखोगे। बाकी यहाँ पर वैल्यू सेट कर दी मैंने। अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है राइट, नॉट नीड राइट दैट फ्रॉम, नॉट नीड राइट द स्क्रैच। लेट्स से मैं कोई प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, देयर आई एम डिफाइनिंग सम प्राइवेट मेंबर्स आईडी नेम, ये सारा मेरे पास डिटेल्स, सारा प्राइवेट। और आप देखो मैं इसको टेस्ट करने के लिए दूसरा एक और क्लास बना रहा हूँ। I create the object of this particular class product की वैल्यूज में सेट करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस बाय दैट इज इट। आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सेस दैट। यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम सेट करना चाहते हो, लैपटॉप विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट। प्रोडक्ट प्राइस। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने डेटा प्राइवेट क्यों किया, मेरा सिंपल रीजन है कि मुझे डायरेक्ट एक्सेस, मेरा सिंपल डेटा को डायरेक्ट एक्सेस देना है। अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस दे दिया तो आप उस डेटा को उस कोई भी वैल्यू सेट, देयर इज नो कंट्रोल। आप प्रोडक्ट की प्राइस नेगेटिव में सेट कर रहे हो, तब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे और उसको पैसा देना पड़ेगा राइट। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप द डायरेक्ट एक्सेस फॉर डेटा वी मेक द डेटा मेंबर्स प्राइवेट। बट वी डू मेक योर डेटा मेंबर प्राइवेट। डेटा मेंबर्स मतलब आपके इन प्राइवेट में को प्राइवेट करते हैं, सो दैट इट कैन नॉट बी आउटसाइड द क्लास। उसको प्राइवेट क्यों बनाया कि उसको डायरेक्टली एक्सेस ना। फिर अभी आपको अगर डेटा डेटा तो आप स्टोर करोगे, डेटा विल बी स्टोर, so you want to access that or you want to update the value, so you cannot directly access, so what you will do, you will alternate। खाना तो खाना है लेकिन वहाँ फिर आके व्हाट वी विल डू, आपको यहाँ पर आपको लेट से डेटा है आपके पास,
नाउ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वी विल हैव सम डेटा, लेट्स से डेटा क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट आईडी 1 प्राइस है, ये डेटा है मेरे पास, have this data. Now there is one this person who is trying to access data directly. This is cannot be accessed directly because this all of these are, ये तो अगर उसको ये डेटा एक्सेस करना है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर सेटर मेथड्स होगी पब्लिक और गेटर, ये क्या करेगा, इन पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा और ये मेथड्स फिर गेट करेगा, गेट करना मतलब रीड करके उसको वैल्यू रिटर्न करना, सेट करना मतलब एग्जिस्ट, so you are getting the access, you are getting the access but not directly, getting the access but not directly, ठीक। अब ये ऐसा क्यों करते हैं हम, डायरेक्ट एक्सेस क्यों, जैसे कोई पर्सन का एज है सेट करना है उसको, अगर आपने उसको प्राइवेट नहीं हो पब्लिक है, एज नेगेटिव में चला जाएगा, पर्सन एज विल बी सेट इन द नेगेटिव, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट योर एज शुड बी ग्रेटर देन और समथिंग, आप यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अभी यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम इसकी पब्लिक गेटर्स एंड फॉर योर सिंप्लिसिटी आईडी प्रोवाइडर, सारा गेटर सेट मैन्युअली लिखने नहीं है, इसे बोला जाता है पब्लिक गेटर्स एंड सेटर्स। तो पब्लिक गेटर्स मतलब दीज आर दी मेथड्स, व्हाट आर पब्लिक गेटर्स एंड सेटर्स, public getters, what are public getters, these are the public methods which returns the private object. What is syntax, how do we define syntax, getters, आप लिखते हो public, यहाँ पर आपका रिटर्न टाइप और फिर यहाँ पर लिखते हो आप गेट, जो भी नाम हो आईडी यानी यहाँ पर लिखते हो, और आप यहाँ पर लिखते हो रिटर्न दिस डॉट, दिस डॉट भी लिखने के लिए आप लिख सकते हो का वेरिएबल, एग्जाम्पल आप उठा के लिख सकते हो, लेट से मुझे किसी का अभी लेट से कोई मेरा क्लास में एक वेरी क्लास पर्सन है और उस क्लास पर्सन के पास प्राइवेट फील्ड इन, ठीक, तो आप यहाँ पर गेटर कैसे लिखोगे, आप हाउ आर यू गोइंग टू राइट द गेटर, यू विल राइट अ पब्लिक int get age, write that return, this is called for, the class, write that class for your getter, then we have public setters. What are these public setters? Again, these are the public methods which sets or updates the value of get instance. सिंटैक्स बहुत सिंपल है आपका, क्या सिंटैक्स है, आप पहले पब्लिक लिखोगे, पब्लिक वॉइड वो रिटर्न कुछ, देन वी से सेट एक्स एक्स मतलब जो भी आपका टाइप होगा, यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा आपका डेटा टाइप,
यहाँ पर आपका होगा दिस डॉट 6 आप एज इट इज आप ऐसे कोई आपका क्लास है, क्लास के अंदर क्लास है प्राइवेट फी आपको सेट, आप लिखो पब्लिक, पब्लिक वाइड सेट, और यहाँ पर आपका सेट, यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्ट करोगे आप इन ईच, यहाँ पर सेट दिस डॉट, और अभी जो हमने क्लास के अंदर जो प्रोसेस को टेक्निकल टर्म इज दैट व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, वट एवर वी what we did, करेक्ट। अभी कोई पूछेगा आपको व्हाट इज इट, इट इज ए, अभी इन कैप्सूल, कैप्सूल आप कैप्सूल बाइंडिंग, कैप्सूल देखो मेडिसिन होता है, यू लॉट ऑफ मेडिसिन दे आर बाइंड टुगेदर, दे आर बाइंड टुगेदर, so encapsulation is simply it is the process of binding of data and methods together, is the process of binding data and methods together. So what question, now how do we achieve, how do we achieve that, see it is a process of making data members private and accessing them through public getter and what is, what is simple, it is a process of data and method, how it is achieved, it is a process of data members private accessing them through getters, okay? अब इसमें क्या करते हैं, why to use, why to use, to use करते हैं इसे, make the data, so what do we hide here, so to secure the data for the, and what we are doing, what is the use of encapsulation, secure the data or hide the, what are the advantages, what are the advantages of using no direct access, no direct access data, so data is no direct access, मतलब आप उसको direct access, that is the benefit, और उसको direct access नहीं आप उसको फिल्टर कर सकते, तो यू गेट अ बेटर कंट्रोल कि डेटा में वैल्यू कौन, अगर आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं डायरेक्टली, बट अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस, गेट अ बेटर कंट्रोल, बेटर कंट्रोल ऑन द डेटा, का मतलब क्या हुआ, अगर किसी का एज का मुझे वैल्यू सेट करना है, आप पर्सन डॉट एज करके माइनस वैल्यू सेट करोगे आप, लेकिन आप डायरेक्ट एक्सेस देते हो तो आप क्या करोगे पर्सन डॉट सेट एज, और आप उस मेथड को इनपुट दोगे, विल गिव इनपुट टू दैट पर्टिकुलर मेथड, देन इनसाइड दैट मेथड वी कैन हैव अ चेक, अगर पर्सन का एज वो जो भी वैल्यू प्रोवाइड किया वो नेगेटिव है तो उसको असाइन नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब चेक हो सकता है, अभी कोई बोलेगा हजार हजार साल तो नहीं, cannot have that value, that value will be also have a check, it should not be less than 0 or it should
than 200. Better control on the data is the advantage. Data is secured. Data is secured. Disadvantage बहुत simple है. What do you think? What is the disadvantage? Difficult, हाँ difficult बोल सकते हो. Simple, lot of code. क्या करना पड़ता है हमें? Lot of code we have. So then the advantage. आपका code lengthy होता है, but that is fine. Is fine. Get a better control. So are we going to use encapsulation real time? You'll find every class encapsulate. You have to just understand what do you mean by encapsulated class. There might be question, what do you mean by encapsulate? तब क्या होता है? Data members are who are they? डेटा मेंबर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स. डेटा मेंबर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स पब्लिक आर प्रोवाइड. तो here let me take an example. Now I have a class called as person. और पर्सन क्लास में एक है जिसका नाम है एज और उसका नाउ. आई एम इनसाइड सम अदर क्लास और मैं क्या कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी डिटेल को एक्सेस करने का ट्राई कर. अब मुझे पर्सन का नेम सेट करना है. मैंने नेम बहुत सही से सेट कर दिया, लेट्स से जॉन. और उसका एज मैंने सेट किया -300. इज इट अ वैलिड एज? पर्सन डॉट डॉट आपको अपने नेगेटिव में वैल्यू कर दिया. तो बस आपके पास कोई कंट्रोल वैल्यू दोगे, हम अलाउ करेंगे. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. अभी आप रिस्ट्रिक्शन क्या लगा सकते हो? पहले तो दिस मेंबर्स प्राइवेट. प्राइवेट होगा तो आप इसे डायरेक्ट एक्सेस. दिस इज ब्लॉक नाउ. अब क्या करोगे आप बनाओगे पब्लिक सेटर मेथड. पब्लिक वॉइड सेट एज. एज आप ऐसा सेट करो, ऐसा एज इफ एज इज ग्रेटर देन 0 then only dot age equal. You get a better control now. Setting negative value, you the age is greater than then only the age. फिर से मुझे रिटर्न करना है. अभी सेट तो हो गया, मुझे रिटर्न भी करना है ना वैल्यू. पब्लिक इंट गेट एज. यहाँ पर आपको रिटर्न करना है. सिमिलरली आप नेम के लिए भी सेट कर सकते हैं. सेट नेम गेट नेम वैल्यू सेट कर दी. यहाँ पर देखो अभी आई एम नॉट एबल टू एक्सेस देम डायरेक्टली. जब उनकी वैल्यू सेट करना है तो आई विल सेट दैट यूजिंग सेट नेम जॉन और पर्सन डॉट. अब यहाँ पर -300 करूंगा तो नॉट बी एबल, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सेट वैल्यू. डॉट गेट नेम
और पर्सन डॉट गेट, अब देखो नेम तो चेंज होगा लेकिन आपका एज एज इट इज जो पहले था वही, पहले कितना था 0 एंड नल, पर्सन का पहले एज कितना था 0 और नेम क्या था नल। नेम तो चेंज हो गया लेकिन एज वैसे के वैसे, आप यहाँ पर चेंज करके दे सकते हो 30, तो इट विल एक्सेप्ट दैट वैल्यू। Simple. So this is how you get a better, how you get the better. So to conclude, what is encapsulation? Encapsulation is the process of binding your data and methods together. And how do we achieve encapsulation? We achieve encapsulation by making the data members private, accessing the private data members through public getters and setters. What is the use of encapsulation? Use encapsulation, hide the data or secure the data, get better control. What is the disadvantage? Length of the this, and it is lengthy little bit, but that is fine. Fine. That is length of the code increases, but in real time, you class public data classes you pick private person आपका data, so your variables will access them with the pick getters. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, यू आर इन गुड। आपका क्लास जो भी होगा, तो क्लास और मेंबर्स डेटा मेंबर प्राइवेट, और उनको आप कैसे, द फर्स्ट पिलर ऑफ योर स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, कहना होता है oops कॉन्सेप्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट वेयर ऑलरेडी देयर बिफोर योर लैंग्वेज। तो ये बोलता है कि आपका जो एप्लीकेशन है डेटा सिक्योर होना चाहिए, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म दैट यू विल सिक्योरली सेट द वैल्यूज टू, that is the principle. What is the first principle is of oops encapsulation, says that your data must be of the application, and it बोल पाओगे encapsulation बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आसान है और लोग बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, इज वेरी इजी। So to understand this concept, you should have the basic of specifiers. So we have 4 access specifiers: public, private, protected, and default. So using this specifier, what we can specify who the class and its component. याद रखने का बात है, आउटर क्लास कैनॉट बी प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर पब्लिक है तो उसको आप कहीं एप्लीकेशन प्रोटेक्टेड है, इसका है विद इन द सेम क्लास एज पैकेज द सब क्लास। पब्लिक का कोई रिस्ट्रिक्शन एक्सेस करो, प्राइवेट विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास यू कैन default means within the class also you can access as well as in the package, same package। ठीक, याद रहेगा। प्राइवेट मतलब विद इन द क्लास, उसका रिस्ट्रिक्शन। अभी आपके पास 3 बॉक्सेस है, सबसे छोटा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर देखो, इफ यू वांट टू एक्सेस विद इन द क्लास ओनली यू मेक दैट एज, नाउ आफ्टर दिस इज योर क्लास, if you want your class should be accessible as default और protected। अभी protected हम सीखने वाले inheritance only, then we have the this, you have 3 levels, oh 3 level, this is kind of आप बोल सकते हो कि ये कहाँ पब्लिक मतलब एनीवेयर विद इन द एप्लीकेशन यू कैन एक्सेस, प्राइवेट मतलब स्ट्रिक्टली विद क्लास इटसेल्फ, क्लास देखना है, और अगर वो आपको प्राइवेट दिखा तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड या मेथड बाहर उस, सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर उस पर्टिकुलर फील्ड को आपने देखा पब्लिक तो आप उसको डिफॉल्ट दिखा तो आपको पता है कि ये क्लास में एक्सेस कर सकते हैं एज वेल एज इन द, चलो
with that we will stop, and tomorrow we'll be starting with that is the class. और तब आपका बोल सकता हूँ मैं इनहेरिटेंस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बिना आप मतलब यू विल नॉट बी एबल टू राइट कोड. दिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज. तब इनहेरिटेंस नहीं आता है तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट राइटिंग, व्हाट इज abstract, what is abstract class, what is, there are lot many things. जावा खुद इंडेंस इतना ज़्यादा यूज़ कर, और आप भी यूज़, आप भी और also, are we using your parents money, are we using the facilities provided by them, why are you using, why are you using their property, since you are the right that you are able, what are you trying to do, reusing the property, yes. नहीं तो अभी लेट से आपको क्लास आना है, क्लास आने के लिए आपको फीस, पहला ऑप्शन है एक तो पेरेंट्स से ले लो, दूसरा ऑप्शन है खुद कमाओ, और कौन सा इजी है, कौन सा इजी, कौन सा, अगर अवेलेबल है तो आपके पास सबसे अवेलेबल है तो रीयूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अवेलेबल नहीं तो हाउ टू. अगर मैं अभी आपको एक फंक्शन कि यूजर को ईमेल, मतलब ईमेल भेजना है यूजर को ईमेल, लेकिन ऑलरेडी कहीं एक क्लास में वो फंक्शनलिटी रखी है, कोई एक क्लास में एक ऑलरेडी वो ईमेल भेज, ऑलरेडी कहीं आपको यूज करने के लिए, मतलब व्हाट यू वांट, you will either write your own code or you can use the code. If you want to reuse the code, we use the concept called as, so अगर आपको कोई inheritance, why do we use, its simple answer is to reuse the, to reuse the code, that is a simple. So tomorrow we will detailed we will discuss, we will need almost, chalo, with that we will stop and we'll continue in the